test to be used depends on the data type of your y and the x's or the fact. We said first possibility, y may be continuous data or y may be discrete data. I could end up doing a project on, say, something like handling time, cycle time, turnaround time, etc., which is all continuous, or I may end up doing a project on things like quality score, attrition percentage, productivity count, etc. Everyone with me so far? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. We are saying that we are looking at situation number one first. Y is continuous. Again, two possibilities: the factor associated with your project Y associated with Y, which is continuous, in which I could have a factor which is continuous or factor which is discrete. For example, I'm doing a project on handling time. My factor is age of the associate, and age is continuous data. Similarly, employee ka tenure is also continuous. Similarly, hold time is continuous. Similarly, experience is continuous. Or it could have been discrete data, maybe shift, gender, process knowledge, test scores, etc., etc. With me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Pranay, what would incentive be, continuous or discrete? You tell me. Incentive is in continuous, right? rupees. If incentive is in rupees, continuous. If incentive is percentage, it is discrete. With me? So for a situation when my Y is continuous, a situation that my project Y is continuous and X is also continuous, we have two tests that we can do. One, which is referred to as correlation test. Another test that is referred to as regression test. And the graph that we make, I am calling it data visualization tool. The graph that we make is referred to as scatter plot. This is what we had done in the previous session, everyone. Yes. Yes, sir. Yes, So sir. we're saying Y continuous, X continuous. Let me pick up some data. So this is data that I have for a collections company. This is a collections PPO, and I am planning to decide what test will I do. Collection is my project Y. I am marking this in a different color. I understand that the data type of collection is continuous because collections is in rupees or dollars. Now, if I want to validate, if I want to verify, if time on system is duration that you spend in the office. If time on system is also continuous, the test that we will use is referred to as regression or correlation. I will talk to you later about why should we only choose regression, but for right now, you should understand that it could be regression or correlation. And the graph that we build is referred to as scatter plot. Similarly, I have a factor here. I have a factor here called work. Work again is the amount of recovery to be made. This is also continuous data, meaning these three still apply. Clear, everyone, so far? So I will search for any other factor which is continuous. Ek aur mila mujhe. This is experience. I will do the same thing here also. Let's try doing this on Minitab. I copied this data from here, opened my Minitab, and in the gray area, I will paste the header. So team leader comes here. If you were to make a mistake and paste it here, see what it will do for you. Minitab gives you that option to move it up, but let's say I'm not doing it right. If you see, a continuous data also has gotten into T. It says C2T, meaning this is a text column. So every data point that you have has become text column. There, everyone, you should always have the header here. Now let's start doing the test. I go to stats, I go to regression, I go to regression, I go to fit regression model. Response means your project Y collection. I can choose any continuous data. So let's say I am choosing time on system. Press OK. If you see here, the first thing you have to locate is your factor, which is TOS, and the p-value associated with your TOS. You see, the p-value is coming at 0.539. Correct, everyone? If I were to take a screenshot, first thing I'm saying is you should look at the p-value that you have gotten from your for the factor that we were looking at. I'm just highlighting that. Because my p-value is greater than 0.05, I am concluding that null hypothesis is true. The p-value is greater than 0.05, HO is true. Simple thought, everyone, so far. The next thing to look for is your R square value. R square here, let's understand what these things mean to us. Step number one, always when you do regression, check for p-value. Null hypothesis will say factor does not impact Y significantly. Alternate will say X or the factor impacts significantly. So we are saying, based on the above screenshot, we conclude that time on system does not impact. Step number two, if P is alternate, look for R square value. No, how do you guys live in your professional life?
12 o'clock का session joining at 12:30. Karan, batch started at 12 o'clock. You are joining 12:30. What is the point, man? R square, referred to as coefficient of determination, explains percentage impact of X on Y. R square greater than 62% is considered significant. Let's look at our value. What is our R square? Less than 1%, 0.12. Yes. Yes, everyone? So you can conclude in your test that there's no significant impact of the factor. If, step 3, if P is alternate and R square is greater than 62%, look for regression equation. Here, if it would have had an impact, I would be able to get a mathematical relationship. Let us try and do it again to see if some other example can give us alternate hypothesis. Again, I do the same thing: stats, regression, fit regression model. Or because I've already done the regression once, I can click this button below view and it will do it says edit last dialog box. I can use it, remove time on system and add the next factor. Let's say work. Press OK. Now look at your results. What is your p-value this time, people? 0. P1 is 0. 0. It's less So than 0.05. what is your inference? Which is alternate So, hypothesis is true. Alternate hypothesis, it is impacting. Now my question is, how strong is the impact? I will look at the R square value. What is the highest R square possible? 100%. What is your current value? 99.4. Almost 99.4. Correct, everyone? Best क्या possible है? 100%. What are you getting right now? 99.4. Meaning very, very significant impact. You can almost bet your neck that if you want to improve your collection, you must focus at this factor. And third, it is also giving you a mathematical equation. The regression equation that we were talking about. This one. If you know one value, if you know how much collection you want, I can decide how much work to allocate. Or if I know how much work I have allocated, I will be able to understand the collection amount that I will get. Simple, or do you want me to do this calculation for you once? Yeah, please. Can you explain? We should do it once, sir. What is the regression equation is telling us? This is telling you the relationship between X and Y. So it has created a mathematical formula to say this is how X impacts your Y. Let us look at this. So Minitab gave us a formula to say that. Oh, yeah. Sorry. Copy. This is what Minitab is given us. Regression equation. Collection is equal to this plus 0.94 of work. Right. Let me write it. C equal to 14.3 plus 0.94 times of work. This is what it is saying currently. This is the formula that we've gotten so far. Right.
So if I were to, let's say I have a situation, let me first create a formula out of this, create a calculator out of this. I'm saying C is equal to 14.3 plus 0.94034 into, let us refer to this column in which I will add work. I'm calling this the work column. So if I allocated a kid in my team 10,000 ka fine, how much money will I get? I will be able to collect $9,417. With me, everyone? Yes, sir. Yes. Or you can create a formula in a different way. If you know collection, you can find out work. If you know work, you can find out collection. Everyone, please try doing this on your machine. If you are stuck, ask me for share your screen and I can help, and I will be able to help. Sir, what does null hypothesis and alternate hypothesis refer to? You weren't part of the previous two classes. No, sir. वीडियो पहले पढ़ना पड़ेगा. एक बार मैं Okay. हाई लेवल व्यू दे देता हूँ आपको. जी जी. So we are saying, as part of the analyze phase of Six Sigma, we want to validate which factors impact my project Y and how much is the impact. And for that, we are conducting some statistical tests referred to as hypothesis testing. Here in the hypothesis, there are two assumptions or hypotheses that we make. Null, which says that factor does not impact. Alternate, which says factor impacts significantly. Whatever we will check based on the p-value, if p-value is greater than 0.05, we accept null. If p-value is less than 0.05, greater than equal to, less than 0.05, we accept alternate. Alternate होगा तो क्या होगा? We will conclude that factor impacts significantly. Null होगा तो we will conclude that factor does not impact significantly. वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा आशीष. This is a good 2-hour conversation. I've shared that Easy, video sure. with the links. Yeah, I'll go through it. Thanks. Please. Everyone, please complete your regression. Let me know once you're done so that we can move forward. हेलो सर. सर एक क्वेश्चन है. सपोज सर मेरे मोर देन वन फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं क्वालिटी को. Okay. तो सर उस केस में मैं दोनों फैक्टर को लेके प्रोजेक्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या करना होगा? क्वेश्चन अभी वेटिंग बॉक्स में डाल दो. पहले ये तीनों चारों टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं. बट प्लीज लिख लो कहीं ये क्वेश्चन. यू वुड वांट टू ओके सर. अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस एंड देन क्रिएट आंसर्स अकॉर्डिंगली. ओके सर, थैंक यू. पहले रिग्रेशन कोरिलेशन कर लो प्लीज. सर ये रिस्पांस कलेक्शन रिस्पांस में लेना है ना? But you are on mute. हाँ जी, कलेक्शन रिस्पांस में ही लेना है.
राकेश, कलेक्शन हुआ मधुसूदन, ही है। राम, रुपेश, पुनीत, डन, आशीष, Yes, Deepika? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Hello, Pranay sir. Done, Actually, sir. मैंने Sir, working on it. Just give me a minute. हेलो प्रणय हम्म, सर, एक्चुअली मैंने साइकिल टाइम और ऑर्डर फुलफिल टाइम पे किया है। दोनों जब टाइम है CYCX है तो रिग्रेशन ठीक किया है। स्क्रीन शेयर कीजिए, ठीक किया है। सर विशाल, एरर आ रहा है, डन। सर एरर आ रहा है कुछ तो। जो कुछ तो एरर आया होगा उसमें कुछ तो लिखा होगा, हाँ सर, दिखाओ एक या सेकंड, बताओ। एक सेकंड सर। ये मैं कलेक्शन को रिग्रेशन में ऐड करने के लिए क्लिक किया ना, हम्म। उसके बाद सर ये क्या लेना है, आगे कुछ लेना, कंटिन्यू प्रेडिक्टर्स वगैरह। स्क्रीन शेयर करो ना। एक सेकंड कर रहा हूँ, विजिबल है। हाँ जी, कंटिन्यूअस प्रेडिक्टर में एक्स डालो, वर्क डालो, टाइम ऑन सिस्टम डालो, कुछ भी डालो। टाइम ऑन सिस्टम, सेकंड वाला हाँ 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 डबल क्लिक। हाँ सर। ओके, पी वैल्यू देखो, आर स्क्वायर देखो। पी वैल्यू कितना आ रहा है? 0.05 से बड़ा या 0.05 से छोटा? हफीज, सर या तो 0.05 से बड़ा है। बात खत्म, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। खत्म करो, बोलो टाइम ऑन सिस्टम का कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हो गया खत्म। अगर होता 0.05 से छोटा तो आर स्क्वायर देखते। आर स्क्वायर अगर 62% से ज्यादा होता तो रिग्रेशन इक्वेशन देखते। क्लियर है? यस सर। यस सर। पहला क्या देखना है? प्रणय सर, मेरे पहला क्या देखना है? पी स्क्वायर, पी वैल्यू, सॉरी पी वैल्यू। क्या तो मेरे केस में 0.5 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है, खत्म। आर अगर स्क्वायर वैल्यू impact देखता हो, हूँ, नहीं देखना ही नहीं। जब पी वैल्यू ऑल्टर नल आ गया तो आगे कुछ देखना ही नहीं। ओके सर। हाँ, सर पुनीत। एक कंफ्यूजन है मुझे कि ये जो है ना, लाइक कंटिन्यूस डेटा और डेटा में थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना, ब्रीफ मिलेगा तो समझ आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा कंटिन्यूट रहेगा। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं वो। हाँ पुनीत। सर एक क्वेश्चन है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा कभी होता है कि डेटा में लेट्स से इट शोज व्हेन वी परफॉर्म दिस टेस्ट इट शोज दैट p value is more than 0.05, so we will say that okay null is true, we'll look for an alternate. However r square value is let's say कभी कभार होता है। 70, हाँ, फिर कभी क्या कभार मतलब होता है। होता है उसका? we'll go with it or we will just leave it? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने दो। हम जब अच्छा। कभी भी रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं ना तो दो बातें देखते हैं, रिलेशनशिप का ट्रुथफुलनेस, रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड। राइट। दो बात, ट्रुथफुलनेस और मैग्नीट्यूड। वी आर सेइंग व्हाट यू सी इन अ सैंपल, डज इट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन और नॉट, उसको हम पी वैल्यू से वैलिडेट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में एक फ्राइडे को 14 बच्चों का जन्म हुआ। ऑल ऑफ देम वर फीमेल्स। द हॉस्पिटल डॉक्टर डीन गॉट वेरी हैप्पी, बोला मैं ऐड लगा दूं कि अगर आपको लड़की चाहिए एज योर चाइल्ड तो हमारे यहाँ डिलीवरी करो। इज 13 सैंपल गुड इनफ पुनीत टू बी एबल टू डिसाइड ऑन सच अ लार्ज थिंग? नो, नॉट एट ऑल। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत हाई आएगा, 13 आउट ऑफ 13 या 14 आउट ऑफ 14 हो गया है, राइट। लेकिन ट्रूथफुलनेस में पी वैल्यू में वो फेल हो जाएगा। कितने? राइट। तो वो स्टोरी आपको ये सोचना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे what I am looking at is sample and I am trying to draw conclusion about the population parameter. Right. So whether sample is reflecting the population or not is being conversed using the p-value, and then we want to see the relationship. तो कितनी बार होगा कि सैंपल में बहुत स्ट्रांग होगा बट सैंपल इनसफिशिएंट मान के पी वैल्यू इसको ऑल्टरनेट नहीं करेगा, नल कर देगा। इट इज पॉसिबल समटाइम्स। ओके, सो उस केसेस में क्या किया जाए फिर सर? मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो सैंपल साइज बढ़ा के दोबारा चेक कीजिए, दोबारा चेक करें। because there's no point working if it is not impacting. तुमने क्या किया, तुमने अपनी पूरी टीम में, यू हैव अ 60 पीपल टीम जिसमें 4 लड़कियां हैं,
4 लड़कियों के परफॉर्मेंस पे क्या तुम कंक्लूड कर सकते हो कि लड़कियों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या बुरा होता है? I will find it insufficient. हाँ, absolutely, because sample तो is too low ये to सोचना consider. पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा. Everyone सर ये सैंपल done with- साइज का कुछ लिमिट होता है? हाँ, मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है. अरलॉन्ग का कैलकुलेटर है या मिनट ऐप है, उस पर इस्तेमाल होगा. एक दिन लेट अस डू अ देखो ये कॉन्वर्सेशंस कैसे हैं ना कि ये थोड़े स्टैटिस्टिकल है, तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन मे बी अगर आप लोगों के पास स्ट्रेंथ हो तो लेट अस गेट इनटू दीस थिंग्स. ये बहुत मजेदार इलाका है, बट सर एक थोड़ा सैंपल कॉम्प्लिकेटेड. साइज, सर, और एक बहुत पहले आपने हमें डेटा के ऊपर सिखाया था, रैंडमनेस ऑफ डेटा को लेके. सो करेंगे आज दैट टू सम टाइम हाँ. इफ वी कैन आज डिस्कस. करेंगे ना, आज तो करेंगे वो. सर रिग्रेशन का इक्वेशन डिफरेंट भी आता है क्या अभी? वो तो आपके डेटा पर डिपेंड करेगा मुंतजिर, जैसा डेटा आपने लिया है. मैंने भी हर जो ओके जैसा डेटा होगा वैसा आएगा. आई एम मूविंग फर्दर पीपल. मैंने आई एम भी नाउ गेटिंग I am now getting into correlation. Anyone, any questions? Please ask me. Else I am now headed into correlation test. My screen is visible to all of you. यस सर. सर ये जो अभी टेस्ट आपने किया सर, ये एक्चुअली मैं देख नहीं पाया सर, एक बार बता देते सर कौन सा है? Say that again. सर ये जो आपने अभी टेस्ट अभी करवाया था सर, ये मैंने देखा नहीं. लेट कमर्स को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है. 10 बजे की क्लास में 12 बजे की क्लास में 12:30 हो गए तो देखोगे कहाँ से? टीवी पे थोड़ी नहीं चल रहा है, क्लास में अटेंड करना पड़ेगा. नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू था. नहीं करण, ये ऐसा एक भी क्लास नहीं हुआ है जिसमें आप टाइम पर रहे हो. नेटवर्क इशू सबको होगा भाई. कर लेते हैं दोबारा प्लीज. अब एनालाइज का पोर्शन शुरू हो गया. ये फ्रेंच है बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है. एवरीवन प्लीज इंश्योर कि आप क्लास पढ़ के आए, आप क्लास में टाइम पे रहें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको. लेट्स डू रिग्रेशन अगेन. लेट अस पिक अप अनदर डेटा. दिस इज, अरे यार कचरा डेटा कौन. जिसने ऐसे निभा गया ना. Everyone, you guys can see my screen, correct? यस सर. यस सर. यस सर. मैं फिर वही काम कर रहा हूँ. इंसर्ट कर दिया लेफ्ट में, इंसर्ट कर दिया ऊपर. मेरा प्रोजेक्ट वाई इज कॉलम जे विच इज टोटल ब्रेकेज. प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन किलोग्राम. दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस डेटा. एवरीवन? यस. राम, अगर यस मेरा सर. डेटा कोई यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एज है, तो वो कंटिन्यूअस डेटा हो गया. तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट वेदर प्रोडक्शन impacts my breakage or not, I will need to use either the correlation test or I can use the regression test. I'm taking this data. Karan, साथ साथ करते रहो प्लीज. ओके सर. मैं गया स्टैट्स, रिग्रेशन, फिट रिग्रेशन मॉडल, प्रोजेक्ट वाई, C9 में टोटल ब्रेकेज, X प्रोडक्शन. प्रेस ओके. फर्स्ट थिंग जो मुझे देखना है, p value. If p value is alternate hypothesis, like in this test it is, I will move to R square. R square should be greater than 62%
for us to consider it significant. यहाँ तो कचड़ा है. कितना आ रहा है? 8.34. 62 से बहुत पीछे है. Everyone with me? Yes. Yes, अगर ये sir. 62 से ऊपर होता तो अपन रिग्रेशन इक्वेशन भी देखते. इसी का कोरिलेशन करके देखते हैं. I go to stats, basic stats, correlation. ये टेस्ट कंडक्ट करने के पहले रिजल्ट पे क्लिक करके पेयर वाइज कोरिलेशन टेबल को सिलेक्ट कर दो. y और x और y नहीं करना, y और x करना है. तो मेरा y है टोटल ब्रेकेज वर्सेस प्रोडक्शन. प्रेस ओके. वो जो भी उधर म्यूजिकल धमाका, उनको जाके बोलो तो साउंड कम करेंगे. आइटम लगे भाई मेरे पास. फिर वही कहानी. पहला काम की वैल्यू. Everyone, whatever test you are doing, the first step that you should take is to look at p-value. Step 1, look for p-value. In a correlation test, null will say variables are not related. Alternate will say variables are related. Please observe the change in lingo. In the regression equation, our null was saying x impacting y, x not impacting y. Here we have changed it to variables are related, variables are not related. This is considered to be one of the biggest lacunas of using correlation test. Correlation does not understand which is the factor, which is the response. It only says both these variables are related to each other or not. It is saying total breakage and production are related to each other. Which one impacts which one, I don't know. But that is why you don't use correlation. With everyone? Yes. Yes. Yes, sir. The first thing that you are looking at is the p-value. Second thing that you are looking at is the R value or the correlation coefficient that you see here. R value, also referred to as coefficient of correlation, is a value that varies from +1 to -1. R equal to +1 means strong positive correlation. R equal to -1 means strong negative correlation. And R equal to 0 means no relation. Now you tell me the R value that you have gotten, 0.289. Is it closer to 0? Is it closer to 1? Is it closer to -1? People? No relation. Yeah, it is closer to 0. Closer to 0. I will not jump in to say, Puneet, no relation. I will say very mild relation. Yes? Right, exactly. Because it is still close to 0.3.
So I will say very mild positive correlation. Why positive? Because it does not have a negative sign. Karan, clear? Ram? Yes sir, clear. Yes, sir. सर एक कोरिलेशन और कर सकते हैं, हाँ, बहुत सारे करते हैं. जस्ट टेस्ट. हाँ. So I'm saying go to stats, go to basic stats, go to correlation. Choose your Y first, followed by the X. So let's say I have total breakage versus baking time. Press OK. You will get your p-value. P-value here. Let's make a screenshot again. Insert page break. Again, I will start with looking at my p-value. What is my p-value telling you? 0.05. Is it greater than 0.05 or less than 0.05? Less than 0.2. Less than 0.05. Meaning, if variable. Now look at the lingo. What does alternate say? Variables are related to each other. Related. So we will conclude that baking time and breakage are related to each other. We are not saying impacting anymore. We are saying we will conclude that baking time and total breakage are related. I cannot conclude which one impacts which one. Second thing to look at is the correlation coefficient or the R value. This is closer to 0 than it is to 1. As R equal to 0.149 means that very mild positive correlation. Everyone with me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर लेट्स से अगर बेकिंग टाइम फॉर लेट्स से अगर इंक्रीज हो गया तो टोटल ब्रेकेज भी इंक्रीज हो जाएगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. और आशीष, यही तो तुमको पता करना है कि क्या वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे मेरी जिंदगी ठीक चलेगी. नहीं तो मेरे सारे बिस्किट टूट रहे हैं भाई. तो you would want to understand किस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट है, सो दैट वी कैन फाइनली गेट टू अ ऑप्टिमम वैल्यू कि अच्छा इतने टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाने दूंगा, इतने से ऊपर फला चीज नहीं जाने दूंगा, सो दैट वी गेट आवर आउटकम. Yep. Sir, so you were telling us X continuous, discrete, and then Y continuous. Then the data visualization tool would be scatter plot. तो अभी वो नहीं किया ना हमने, अभी हमने तो कोरिलेशन और वो ही किया है, राइट? हाँ, अब वो करेंगे. अब स्कैटर प्लॉट करेंगे. So any particular situation, Pranay sir, wherein while we will always prefer regression in this case, but any particular situation where we only prefer correlation when we just have to. Not for me. I will always prefer regression. Okay. क्योंकि मुझे तीनों वैल्यू मिल गए. I get my p value, I get my r square. R square is a great number to have. ये समझो कि तुम क्लियरली बता पा रहे हो कि प्रोसेस नॉलेज का कितना इम्पैक्ट है तुम्हारे क्वालिटी स्कोर पे. मेरा तो लाइफ सेट हो जाएगा भाई. नो, अंडरस्टूड. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप अपन ढूंढ पाए. तो एक तरीका है मैग्नीट्यूड ढूंढने का इज आर स्क्वायर. इसलिए आई विल लुक फॉर रिग्रेशन एंड when you look at modeling tomorrow, when you are looking at doing predictive modeling for your business, the regression is the only way to go. Okay. We'll talk about that also. Sure. Then we are jumping into our strategy. Sorry, someone. Ram, you were saying something? Actually मैंने तो ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम डिले एंड ऑर्डर डिमांड के बीच में निकला है. तो यहाँ पे जो पी वैल्यू है ना 0.5 से ऊपर आ रहा है.
ठीक है, मतलब इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है इतना। Let's now move to doing the scatter plot. I'm sure 7QC tool में भी किया होगा, but let's do it again. I go to graph. The second option is scatter. I will always choose with regression option. Okay. Total breakage versus production. Total breakage versus baking time. Total breakage versus baking temperature. Press OK. I have 3 scatter plots. This line is moving upwards. If you were to scroll, you will get your R square value also. Is getting 8%, 8.3. Very mild positive correlation. Yes, people? If I increase my production, my breakage is also going to increase slightly. Agree with my observation, people? Yes, sir. Now look at this. Taking time, almost negligible impact, 2%. No, 2.2 R square. Very, very mild positive correlation. Third, this is going down. Taking temperature. Get me the R square value, please. Very little, but taking time is negatively impacting your breakage. So you are, while the impact is very, very less, it is only 1.5%. Let's do correlation for this. Let us see its value. Stats, basic stats, correlation, total breakage versus baking temperature now. Okay, at temperature. Okay. No impact. No impact. Not related. Neha corrected me. No impact nahi bolna and not related. Variables are not related to each other. Variables are independent. Done, people? Understand? Yes, sir. Yeah. Yes. Please do your regression ones. Ask me questions. Sorry, scatter plot ones. Ask me questions if you have some. Then we proceed further. So, Pune sir, I have taken two variables. First is collection, and then second is experience. Okay. Screen share karo. And Screen share karo. स्क्रीन आएगा तो बताइए। हाँ आ गया। पी वैल्यू कितना? बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस 0.053 नहीं 0.053 मतलब नल हो गया, खत्म। फिर भी अगर बॉर्डर लाइन मान ले, नीचे चलें जरा, आर स्क्वायर दिखाएं। R square is 1.23. भूल जाओ। So no impact. जिससे ऑफिस में दुश्मनी हो उसको ये वाला फैक्टर दे दो, वो बेचारा मेहनत करता रहेगा, कोई असर नहीं होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट पे। हम लोगों के पास होते थे ना कुछ एक्साइटेड बच्चे, सर हमको भी प्रोजेक्ट में लगाओ, तो उन बच्चों के लिए यही सब होता है फैक्टर। उनको दे दो, वो कूदते फांदते रहेंगे, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में। अगर इसमें भसड़ भी मच गई तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो यू कैन हैव फन। Okay. Second option, scatter plot.
थर्ड ऑप्शन रिग्रेशन, ओके, पहले कलेक्शन, डबल क्लिक, टॉस, वहाँ टॉस डालो, डबल क्लिक, टॉस, अगला फिर कलेक्शन डालो, रुक जाओ अभी 2-3 करते हैं, कलेक्शन डालो फिर से, वर्क, ओके, फिर डालो कलेक्शन, अच्छा एक ही बारी में कई कर सकते हैं। हाँ, कलेक्शन वर्सेस एक्सपीरियंस, एक और डाल लो, कलेक्शन वर्सेस एवरेज पेमेंट साइज, ओके। नीचे जाओ जहां पे वो जूम वाला बटन है ना, हाँ ठीक है, ऐसे भी देख लो, कहीं भी टच करोगे ना तो आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा एंड में, हाँ आ गया, आया था कुछ, एंड वाले में, एंड में जाओ और राइट जाते जाओ, राइट जाते जाओ, आया था। सर इसमें भी आर स्क्वायर वैल्यू सेम तरीके से देखते हैं 0.62%। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट दिखाइए, टॉस हो गया, वी आर कंक्लूडिंग दैट नो इम्पैक्ट, अगला बताइए। ये खतरनाक होगा, आर स्क्वायर, लाइन छू दो इस तरह, $99। अगर आप प्रोसेस मैनेजर हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए भैया, वर्क को संभाल के रखोगे तो ही कलेक्शन होगा। फाइल्स अच्छी मिल रही है आपको, एवरीवन विथ मी? मुंतजिर डन, राकेश डन, करण? Yes, sir, I have done. करण इंटरव्यू में बहुत पूछेगा कोरिलेशन, रिग्रेशन और स्कैटर प्लॉट, तो भाई 2-3 बार पढ़ लेना इसको। ये सर अभी एक कर रहा था, ये ब्रोकन बिस्किट का कर रहा था। ठीक है, विशाल डन? हाँ, yes, sir. सोनी, मुफीद? यस सर। मैंने जो है ना सर एक क्वालिटी बार स्कोर, स्क्रीन शेयर करता सर, देखते क्या हाँ प्लीज प्लीज करिए करिए, बात है। देखना सर, कहाँ पे कुछ पता नहीं डाटा ले क्यों नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करो ना, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन नहीं आ रहा तेरा करण। आए सर? हाँ आ गया। आ गया सर, ये मिनी टैब वाले मीट को, हाँ डेटा ओके गलत किया पेस्ट किया है। आपने पेस्ट गलत किया, ग्रे लाइन में पेस्ट नहीं किया, जो पहले वाला। हेडर पेज, एक नया वर्कशीट खोल ले, एक नया वर्कशीट खोल ले, कंट्रोल एन कर, कंट्रोल एन, वहां भी कर सकते, हाँ वो भी क्लिक कर सकता है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। So sir, जब like यस सर। whenever we analyze this data, sir, तो is it right approach to use correlation to check the p-value first and then if there is a नहीं यार, correlation? क्यों काम बढ़ा रहा है अपना, क्यों काम बढ़ा रहा है, सीधा रिग्रेशन कर, भूल जा कोरिलेशन। कोरिलेशन हम जैसे स्टैटिस्टिशियंस के लिए रहने दे, ओके वो सर। हम लोगों का फितूर है। जब हम मल्टीपल रिग्रेशन करते हैं ना, तो मल्टीपल रिग्रेशन में हम पहले कोरिलेशन देखते हैं एक्सेस का आपस में, ओके सर, वहां काम आता है। गॉट इट। सर इस डेटा को उसमें पेस्ट करने होंगे? ऊपर वाले कॉलम में पेस्ट करना है, फिर वही गलती कर दी। जो ऊपर ग्रे कॉलम है, डेट वहां पर आना चाहिए, हेडिंग, और 1 नंबर से डेटा शुरू होगा। सेकंड करो, एक्सेल से दोबारा ले आओ ना यार, एक्सेल से दोबारा ले आओ, छोड़ इसको, एक्सेल का है दोबारा।
आप इस वर्कशीट को रहने दो, न्यू वर्कशीट पे दोबारा से डेटा पेस्ट कर दो, वर्कशीट 2 जो आपने खोला। एक सेकेंड, एक्सेल से डेटा उठाओ, एक्सेल से उठा लूँ। हाँ, और वर्कशीट 2 पे पेस्ट करो और ग्रे कलर का जो पहला सेल है C1 उसमें पेस्ट करना। अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कंट्रोल C, अभी आपका ना ये क्लिक हुआ है विशाल वाले सेल में, हाँ बाहर आके, अब आ गए। हाँ कंट्रोल C, अब वापस वहां जाओ वर्कशीट 2 पे, वर्कशीट 2 पे जाओ, C1 पे क्लिक। हाँ हाँ ऊपर यहाँ ग्रे वाले में, अब कंट्रोल V कर दो बस। राइट, स्टेट्स, ग्राफ्स, क्या करना है? स्कैटर करना है, कोलेशन करना है। पहले y साइकिल टाइम ठीक है। दोबारा कर, क्या ग्राफ बनाएगा भाई, ठीक है। विद रिग्रेशन, साइकिल टाइम को टाइम, डबल क्लिक कर, साइकिल टाइम को डबल क्लिक कर। प्रोडक्शन ले रहा है। हटा देना प्रोडक्शन, नहीं पहले साइकिल टाइम वर्सेस करो, प्रोडक्शन को हटाओ, वहां से, हाँ डिलीट करो, डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट का बटन दबा दो, हाँ। साइकिल टाइम डबल, थर्ड वाला डबल क्लिक, और उधर डालो C7 टोटल शिफ्ट ब्रेकडाउन, C7 डबल क्लिक, यस सर, ओके मारो, या कर दो, एक और कर दो, हाँ साइकिल टाइम एक और करो, एक और ओके हो गया सर। कोई बात नहीं। यहाँ नहीं आएगा, ये तो शीट है, जो पीछे वाला आपका शीट है उस पे आपको लाना पड़ेगा। नीचे जा, जहाँ जूम का बटन दिख रहा है तुझे, नीचे जाओ, एकदम स्क्रीन के नीचे जाओ, छोड़ो इसको, एक मिनट इसको छोड़ो, नीचे जाओ, यहाँ ब्लू वाला स्ट्रिप है, हाँ उसके बगल वाला, करेक्ट, इस पे क्लिक करो, वो रेक्टेंगल पे क्लिक करो, हाँ रेक्टेंगल, हाँ 98.5, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक सर। डन पीपल, आर वी बैक, स्टार्ट करें आगे। Yes, yes. Yes, Pranay sir. So we are now done with this part where we are saying y and x are both continuous. Next set is when we are saying my y is continuous but x is discrete data. Insert page break. Y continuous, x discrete. We are saying we're doing a project like cycle time, handling time, and I have my factor which is discrete. First thing, तो
I'm the first thing I'm looking at is whether if y is normal data, if your y is normal, we will use mean based tests. If y is non-normal, we will use median based tests. Objective क्या है? We are still looking at identifying whether my x impacts my y. I am looking at a situation that my y is, let's say, handling time for collections or breakage in kilograms, while my factor, let's say I'm doing a project on handling time. So my factor is something like shift, gender, etc., etc. Question number one is that you will have to identify whether your y is normal or y is non-normal. To check if data is normal or not, we have three options. Option one, we can use graphical summary. Look at this. I have my project Y total breakage. I want to check whether this is normally distributed or not. Option number one, I can go to stats, basic stats, graphical summary. Double click, press OK. And one of the first things that graphical summary will give you is the Anderson-Darling normality test. Everyone, you guys can see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Print screen, copy, paste. Like I was saying, you should start with the p-value. And for our normality assessment, this is more than enough. P-value greater than 0.05 or equal to 0.05 will mean data is normal. If p-value is equal to or greater than 0.05, we conclude that data is normal. If p-value is less than 0.05, we conclude data is non-normal. If your data is normal, the preferred measure of central tendency is mean. If data is non-normal, you will use median. Clear thought, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'm saying there are two situations. One in which y is normal, another in which my y is non-normal. When my data is normal, we have three tests that we can perform. Y continuous, X discrete,
If y is normal, ये तो फोटो ऊपर बना देता है. If y is normal, we will use mean based test, also referred to as parametric test. If your y is non-normal, we are using median based test, also referred to as non-parametric test. There are three tests that we use when we are in the mean wala category. One test which is referred to as one sample t-test, another referred to as two sample t-test, another referred to as one-way ANOVA. सर एंटर डाल के टैब हो गया. एंटर डाल के टैब कर दो सर, हो जाएगा. We are saying there are three tests when we are using the mean wala tests. Similarly, in the median wala test, we have three options. One referred to as, in the place of one sample t, we will do one sample sign. In the place of two sample t, we look at Mann-Whitney. In the place of one-way ANOVA, we look at modes median. Let's start with the mean test, also referred to as the parametric test. I'm saying these are three tests that we will use. One referred to as one sample t test. This test is used there are two usages. One usage is that if you want to compare mean of a group versus the standard. For example, I want to compare collections data versus some target. With me, people? I have attendance data for people. And I want to compare against a target of, let's say, 140 hours, which is the organizational norm. The organization wants everyone to come to the office for 160 hours. I want to check if people are able to achieve that or not. I am looking at doing the one sample t test. People with me so far? Yes. Yes, sir. Yes, sir. I have data C2, which is of collections. I go to stats, I go to basic stats, I go to one sample t. I am choosing the data. I am clicking perform hypothesis test, selecting a target. So let's say my business has given me a target of 10,000. I press OK. It will give you your p-value and the associated information.
like every test, it will also give you p-value. It will also tell you what is the null and alternate say. What is null saying? Mean of the population is equal to 10,000. Alternate is saying mean of population is not equal to 10,000. What is to be accepted? P-value is coming at 0.00. So we will accept the alternate hypothesis. Correct, everyone? Yes, sir. Here we have to understand an associated concept, a very simple term referred to as confidence interval. Please realize that we often look at sample to draw conclusion about the population. I am looking at data for collection for the past 2 months. Quality auditor is let's say today we have done production of 10,000 calls or 10,000 work, 10,000 pieces, 10,000 parts. The auditor will pick up 2, 3, 4, 10 samples, but he will not publish that as the quality score for that part. He will publish that as the quality score for the process. Yes, no, people? Ufit? Madhusudan? Karan? Are you with me? आपका blood test हो रहा है. What are we trying to do? We will take a sample of your blood, but will we conclude that इस sample में diabetes है? नहीं, हम conclude कर रहे हैं कि आपको diabetes है. Correct? हम देख रहे हैं sample, लेकिन conclusion draw करना चाहते हैं about the population. Is that thought clear? Manshu, Mukesh, Hafiz? Yes, Pranay. With me? Sir. We use Yes, sir. we use sample, but our subject of interest is the population. घर में गेस्ट आए थे, अम्मा ने 20 cups चाय रेडी करा, and before she served it to the guests, she took out a teaspoon of chai, tasted it. इंटरेस्ट क्या था? वो 20 कप चाय कैसी बनी है? देखा क्या? एक टीस्पून सैंपल. करेक्ट ना एवरीवन? तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, where we are looking at mean from a sample while we want to the mean of group of the population. Correct everyone? वैगनार का आप एग्जांपल सोच लीजिए. Let's say I work for Maruti. I took out 20 cars made in the Pune plant. उनका टेस्ट रन किया और टेस्ट रन करके मेरे पास डेटा जो आया, लेट्स से आई हैव 300 डेटा पॉइंट्स, 200 डेटा पॉइंट्स, 40 डेटा पॉइंट्स. मैंने उस डेटा के बेसिस पे मीन कैलकुलेट किया एंड आई फाउंड दैट मीन ऑफ माय माइलेज, the mean of mileage of the cars, let's say it is equal to 15 kilometer per liter. But मेरा इंटरेस्ट क्या है? उन 20 गाड़ियों के बारे में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं. I am interested in the larger story. So when you have the mean of the sample, population का mean जानने का एक बहुत आसान तरीका है. The mean of when you have mean of sample referred to as x bar, we can calculate the population mean. This is referred to as, this range is referred to as confidence interval. Thought थोड़ा clear है? Thought पूरा clear है, people? Let's say in our previous graphical summary,
I have the mean of breakage. My mean is coming at 11. Now someone says, based on the sample mean, can you conclude where the population will lie? नीचे देखो, it says 95% CI of mean 11.07 to 11.7. This range where the population is expected to lie, this range is referred to as confidence interval. People with me? Yes, sir. Right, sir. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? संकेत, राज, मुकेश, हिमांशु, हफीज, संदीप. So in nutshell, please correct me if I'm wrong, Pranay sir. So what are we saying here in reference to confidence interval? Whatsoever mean we are getting through this, let's say if we have identified the mean. So our confidence in that mean is 95%. Is that what No, I am we are saying. saying? So you've gotten a mean. Now I asked you कि आशीष मुझे ये बताओ, इस मीन के बेसिस पे तुम पॉपुलेशन का क्या एस्टिमेट निकालते हो? कहाँ जाएगा? कहाँ होगा अभी मेरा पॉपुलेशन? तो आपने कहा कि सर मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि मीन इसके बीच में रहेगा. Let's do this again. I know my median is 11.28. Correct? Everyone, you can see this. Now you asked me कि ये तो सैंपल का मीडियन है, पॉपुलेशन का मीडियन क्या होगा? तो मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा मीडियन 10.92 से लेके 11.79 इस रेंज में तुम्हारा पॉपुलेशन का मीडियन लाई करेगा. एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Sir, correct me if I'm wrong Yes, sir. here. आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो मीन है उसका मेजर पॉपुलेशन जो आएगा 11.0, वो जरा ग्राफ ओपन करेंगे. हाँ, 11.07 से 11.78 के बीच में, मींस इतने 95% लोग, 95% कॉन्फिडेंस में आप कह रहे हैं कि इतने लोगों को ये मीन में ये होगा. थोड़ा सा कर कि मधुसूदन 95% श्योर है कि मीन यहां लाई करेगा. करेक्ट. ओके. You are 95% confident that the mean of the population is going to lie between this. Understood. ठीक है everyone? People? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are still trying to digest. क्योंकि एक बात समझ लीजिए, confidence interval is entire hypothesis testing. तो नहीं समझ में आएगा तो 10 बार बात करेंगे. थॉट बहुत सिंपल है कि हमारे पास सैंपल डेटा है, सैंपल में हमको इंटरेस्ट नहीं है. आशीष, आई टुक आउट योर ब्लड, मेरे पास सैंपल इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द मीन ऑफ योर सम इंडेक्स, लेकिन वो तो मीन ऑफ सैंपल है, पॉपुलेशन का मीन तो है नहीं. मुझे तो इंटरेस्ट पॉपुलेशन में है. तो आपने कहा कि सर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे मैं सैंपल को देख के पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट पास कर सकता हूं. दैट पॉपुलेशन का रेंज इज रेफर्ड टू एज कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन का निकलता है, मीडियन का निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का निकलता है, सब चीजों का निकलता है. विथ मी एवरीवन? तो उसी के लिए एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं वन सैंपल टी टेस्ट. व्हाई आर वी यूजिंग द वन सैंपल टी टेस्ट? One usage is that if you want to compare the mean of a group to a standard, or if you want to calculate the confidence interval of mean of a group. मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाता हूं. I have a question for all of you. एक कस्टमर कह रहा है कि मैं एक नया प्लांट लगा रहा हूं. एक प्लांट का डेटा ये है. मेरे पास एक नोएडा में प्लांट है जिसका प्रोडक्शन पॉपुलेशन का मीन कहां है तुम्हारा? 266 से लेके 276 तक. एवरीवन विथ मी? Yes, yes. Yes, sir.
नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन कि अगर मैं एक सेम फैक्ट्री लगाऊं, सेम फैक्ट्री, सेम मशीनरी, सेम किस्म का वर्कफोर्स, कितना प्रोडक्शन टारगेट होना चाहिए तुम्हारा इसी के बीच में? एवरीवन ये बीच में यस सर यही इस्तेमाल है वन सैंपल टी टेस्ट का। दो इस्तेमाल, एक इस्तेमाल क्या बोल रहा हूँ, एक इस्तेमाल कि तुम टारगेट से कंपेयर करना चाहते हो, दूसरा इस्तेमाल कि तुम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाहते हो। क्यों निकालना चाह रहे थे तुम कॉन्फिडेंस इंटरवल? एक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, टारगेट सेटिंग के लिए, करेक्ट ना? तुम क्लाइंट से एक नया काम लेकर के आ रहे हो, आई एम आस्किंग यू हाउ डू यू डिसाइड ऑन द टारगेट? यू आर सेइंग कि सर मुझे हिस्टोरिकल डेटा दो, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा, उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे अपन अपना टारगेट सेट कर लेंगे। यस नो पीपल, क्लियर है ये थॉट? यस यस दूसरा, इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, अज्यूम करिए ये एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है, तो ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, तुम्हारा प्रोडक्शन ऑलरेडी 266 से 276 जा रहा है। तो जब तुम गोल सेट करोगे, goal must always be outside of this. No, ये तो तुम ऑलरेडी कर रहे हो, तो तुम एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करके मुझे 270 का प्रोडक्शन तो नहीं दे सकते हो। मैं कहूंगा कि भैया ये तो ऑलरेडी हो रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ? करेक्ट ना एवरीवन? तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल देख करके आपको अपना टारगेट सेटिंग में, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में, गोल सेटिंग में इस्तेमाल करोगे आप। क्लियर है ये थॉट एवरीवन? कॉन्फिडेंस लेवल हम 100% नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डेटा बहुत चाहिए होगा, पूरा पॉपुलेशन का डेटा चाहिए होगा। दूसरा, अगर हम इम्प्रूव और कंट्रोल फेज में हैं, and I want to verify if we have achieved our target. ये काम तो ये कर रहा है ना? पहला फंक्शन क्या था वन सैंपल टी टेस्ट का? that you could compare mean of a group versus the standard. To improve control phase of Six Sigma में you will have to check whether goal statement has been achieved or not. Correct everyone? सन्नाटा क्यों है भाई? डराओ मत तुम लोग। सर ये स्टैंडर्ड क्या है? मतलब मीन ऑफ द ग्रुप तो क्लियर है, बट स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे? करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना। मेरे पास टाइम ऑन सिस्टम का डेटा है। If you see here, I have data on time of system. दिख रहा है मेरा स्क्रीन ना? Yes sir. This is number of hours spent in the office. ठीक है? I go to stats, I go to one sample, basic stats, I go to one sample T. I am choosing time on system. Time on system का target क्या होगा? How many hours should you be present in your office, Sony? 8 hours, sir. 8 hours 22 days, or 8 hours 20 days. If it is 20 days, your target becomes 160. 160. Yes, with me? Yes. Yes sir. How did you get 160? This 160 came from your organizational realities. Correct. Another, I am doing a project on collections. मेरे कस्टमर ने मुझे टारगेट दिया है 10,000 प्रोडक्शन, 10,000 कलेक्शन का। यहाँ 10,000 ही डालेंगे ना, स्टैंडर्ड तो 10,000 होगा। करेक्ट एवरीवन? Yes sir, clear. Yes sir. Correct sir. If you are in the improve phase of Six Sigma project and your improvement, your goal statement said that you would improve your goal to 12,000 collection, यहाँ क्या डालें? 12,000 डालेंगे, because वही हमारा गोल है। हमको तो 12,000 से कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है ना एवरीवन? Yes sir. Yes sir. The two usages of one sample t test. One, that you want to compare mean of a group to a standard, or you want to calculate the confidence interval of the mean.
और ये टारगेट सेटिंग जिसको हम बेंचमार्किंग, बेसलाइनिंग, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, मिनी टैब हम लोग यूज कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% या उससे कम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, चाहो तो आप चेंज कर लो। मैं अगर चाहूँ अभी, तो लास्ट सेशन में आपने बताया था कि मिनी टैब जो है कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे वर्क करता है, तो Correct. वो क्या कॉन्सेप्ट है? इसका जो मिनिमम डिफॉल्ट सेट है वो डिफॉल्ट सेट 95 है। आप चाहो तो चेंज कर लो अपना, आपको कोई मना नहीं कर रहा चेंज करने से। अरे यार प्रोडक्शन हटा दो ना। लुक एट दिस, ये 95 लिया हुआ है, चाहो तो इसको 98 कर दो, फॉर ऑल आई केयर। चाहो तो इसको 90 कर दो। सर एक क्वेश्चन है, तो क्या ये 95% कॉन्फिडेंस ये तो सिस्टम जनरेटेड है, हम अपने हिसाब से लगता है कि हाँ, तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ कैलकुलेशन है अपने लिए? बिल्कुल है। मधुसूदन, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक रिसर्चर हो जो दवाइयां बनाते हो, ओके, हाउ श्योर वुड यू वांट टू बी कि फ्लू का वैक्सीन देने से ट्यूमर ना हो? कितना कॉन्फिडेंट होना चाहोगे? 100%? नहीं, इतना तो नहीं होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितना रिस्क है गलत आंसर देने से। तो जितना रिस्क है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है मधुसूदन, सैंपल साइज बढ़ जाएगा। जितना तुमको ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए उतना तुमको पॉपुलेशन के करीब जाना पड़ेगा, विच मीन्स कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, अंडरस्टूड। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी लाई है लॉजिस्टिक्स की। आई वांट टू फाइंड आउट वेदर आई एम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो डिपार्टमेंट, तो मैं जानना चाहता हूं लोग क्या सोचते हैं। आई वांट टू बी 100% श्योर। तो भैया 100% पॉपुलेशन से बात करो, आसान तो है। 120 करोड़ लोगों के पास जाओ, 120 करोड़ लोगों से बात करो। बट सोचते हो 120 करोड़ लोगों के पास जाना, उनसे उनको सर्वे एक्सप्लेन करना, उनसे आंसर लेना, पता चला कि तब तक 5 साल हो गया लॉजिस्टिक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुए। नहीं यार, यही होगा ना, तब तक सरकार बदल गई। यस, सरकार ही तब तक छोटा मोटा भाई आ गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। You will have to realize that changing confidence interval, confidence level is not difficult, but that it adds to your cost. बहुत महंगा पड़ जाएगा, आपका सैंपल साइज इतना बढ़ जाएगा। Clear है this thought everyone? Can we move ahead? सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर पॉपुलेशन में से सैंपल साइज कैसे डिसाइड करते हैं कि इतना सैंपल साइज मैं पिक करूं तो मेरा पॉपुलेशन का निकल जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल? वो तो बहुत सिंपल होता है। You will have to decide on कि आपका पॉपुलेशन क्या है और आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके बेसिस पे मैथमेटिकल फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला अवेलेबल है जिससे आप कर सकते हो ये काम। We are saying there's a test called one sample t test. It is focusing on mean. There are two usages. One usage we said we want to compare mean of a group versus the standard. The other usage is that if you want to calculate the confidence interval of mean, you will use the one sample t test. Everyone with me? And we said when I want to compare mean of a group to a standard, I can put this to several usages. I can validate goal achievement in improve and control phase. When I want to do this CI wala thing, I'm essentially looking at target setting, baselining, benchmarking. We said you can use this as goal of a Lean Six Sigma project must be outside the confidence interval. Yes, everyone, they are clear with this thought? Puneet, we are good. And this is only for the continuous data, right? Yes. कब करेंगे? Y continuous, X discrete. दूसरा requirement, Y is normal data. Mean to be used. Anyone, any questions so far? एक बार दोबारा कर लेते हैं. Let us see how to do the one sample t-test on Minitab. Let's say I'm doing a project on C4, time on system. I go to stats, basic stats, one sample T, double click on time on system. Like you're saying, there are two options. If I only want the confidence interval, don't click this. Press OK. And what is your current performance? Your current performance is between 148.72 to 157. This is where your population mean is. While if you want to check it against a standard, stats, basic stats, one sample T, EOS, compare it against, let's say, 160.
Now look at one thing very carefully. What are you doing currently? 148 to 157, correct? If the target is 160, what do you think will happen? If you have chosen a value which is outside the confidence interval, it will be alternate hypothesis. If you use any value that is between them, give me a value that is between them. People choosing 155 right now. 151. क्या होना चाहिए? Null hypothesis. So 149 select कीजिए sir एक बार. 149. Press OK. Null hypothesis. What is null saying? Mean of the population is equal to 149. Alternate is saying mean is not equal to 1. Now I am going to the next test. Exactly. Next test that we are doing is the two sample t-test, in which we are essentially screen दिख रहा है everyone? Yes, sir. Yes, sir. Visible है. Yes, sir. We are now looking at doing the two sample t-test, where we are looking at comparing mean of two groups. So let's say you are doing a project on handling time, and you have you want to compare it against gender. Why gender? Because this factor में has two levels. Correct, everyone? I want to compare cycle time of two machines. Then I'm using the two sample t-test. Let's go back to our data sheet. All of you can see my screen, correct, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Team leader is discrete data, correct? Because it is category, it is in category. I will check how many team leaders do I have. It looks like more than two, correct, everyone? I have Anish, Vicky, Gaurav, Mohit, Nitin, Pankaj. It is greater than two. When you want to compare mean of greater than two groups, you will do the one-way ANOVA test. With me, everyone? Yes, sir. Now look at this data. I have information about right party contact, but I converted this into pass and fails. I had some target. This is the target. I have converted this data into binary data, which is again X discrete. People with me on this thought? Yes. If I want to compare this factor against my collection, because it has only two groups, pass and fail, I will look at doing the two sample t-test. Logic clear, everyone? Right, sir. Look at this. Previous experience में I have three subgroups: C, CS, OBS. Greater than two groups? Again, one-way ANOVA test. People? Yes, no, black, white. You understand this? Yes. Comparing Yes, sir. mean of two groups, two sample T. Comparing mean of greater than two groups, one-way ANOVA. Yes, Ashish. So, so when we are doing, let's say, this test, one sample t test or two sample t test, we only take one variable, right? We only take one x. Correct. Correct. But that X will have multiple levels. If that level is two only, I have taken RPC. RPC currently has two levels, pass and fail. Then I'm using the two sample t-test. When I have more than two subgroups, I have C, CS, and OBS. Then I'm doing one-way ANOVA. Look at tenor. Tenor has how many? What do you guys see? How many subgroups does it have? Three. 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 More than two. Which means I will do the same test. One-way ANOVA. Tell me for gender, please. 2T. Only two. Two sample t-test. I have shift. More than More two. than two. One-way ANOVA. I have marital status. Two. 2T. I have education. More than two. One-way One-way ANOVA. One way.
Logic clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now clear. So if I am looking at comparing mean of two groups, I am doing two sample T. If I am looking at comparing mean of more than two groups, I am looking at doing 1 and over. Get thought, everyone? And the graph that we build, the data visualization tool that we use in such cases is referred to as main effect plot. Another graph is interval plot. Let's try doing them and then we move further. Let us start doing the two sample T test. In our example, 2T was gender, marital status, RPC binary. Correct, na? If I go to stats, basic stats, two sample T test, put in your Y, which is collection, versus RPC binary. P value is coming at 0. Null will say mean of both groups are same. Alternate will say mean of both groups are different. What did you get? Mean of both groups are different. Correct, everyone? 0.0. Yes, sir. 0.0, meaning alternate is true. Correct, no? Right, sir. Sir, can you repeat it once again? Sure. So this is what I got after the two sample T test. This is what I got. I am looking at my P value and deciphering that null is alternate is true. Everyone with me? Simple thought so far? As the P value is less than 0.05, we conclude that HA is true. Alternative hypothesis. Null will say mean of both groups are same. Alternate will say mean of both groups are different. Here, alternate is accepted, so I will use this. Now we found out that one of them is true. Which one is bigger than which one? I don't know currently. Correct, na? It is only saying one mean is different than the other, but I don't know which one is better, which one is lesser. So I will now build a graph. I go to stats, I go to ANOVA, I have interval plot and main effect plot. First look at interval plot. I will choose the with group option, press OK. Collection versus RPC binary, press OK. So people who have not achieved their RPC target, their collection is less. People who have achieved their RPC target, their collection is more. Everyone with me? Yes, sir. Yes, sir. This is giving you the confidence interval of fail, confidence interval of pass. If their confidence interval were to overlap, it will be null. If the confidence interval don't overlap, it will be alternate. What do I mean by overlap? Let me pick shift. Let me see. Look at this. Some part of all of this is overlapping each other. No, this starts here, but this is overlapping all three. If you were to do a 1v ANOVA test for this one, it will become null hypothesis. In our case, there was no overlap, hence it was null hypothesis, alternate hypothesis. Let's do it for another one. Stats, basic stats to sample T. I want to do this one. Gender. Male versus female.
What is it saying? P value is 0.1, greater than 0.05, which means that men and women are not doing differently. Mean of collection of men versus mean of collection of women are same. With me, everyone? So null will be true. Yes, sir. Everyone? Yes, yes. Yes, sir. And if we will prepare that graph here, so there will be a overlap, sir, right? Absolutely. Let's do that. Stats, ANOVA, interval, width group. I am doing gender. That's okay. There is overlap. Yes, sir. When you have greater than two groups, you go to stats, ANOVA, one-way response, which is collection, versus Shift. Where is my p-value? Let's first look at the photograph. Basis the photograph, what do you tell me? Null or alternate? It's null, sir. Null, because there is It's overlap. P-values. Let's take another one. Instead of shift, now I have taken experience. Previous experience. Let's look at the photograph first. Now tell me, null or alternate? It's alternate, sir. And which group? Alternate. And which group is doing poorly? The people that I have hired from outbound sales. These monkeys are killing my collection. Correct, na? People from customer service background are the best collectors. OBS are the worst collectors. People from calling experience are less than the customer service. Correct, everyone? Yes. So if you're doing a project as an operations manager, start to go behind these monkeys from OBS. What is gone wrong with them? Let's find out. Let's fix it. You will have to develop a training module on training these people from outbound sales to say people who empathize more with the customers, who are in the service mode, will always be able to sell better, collect better. Sorry. What has happened to us as a country today? Collections is become a harassment process. No, these people are so disrespectful to you. Okay, people in outbound sales are mostly people who are trying to fool you. People who cannot empathize will never be good people, will never be good recovery people, will never be good collections people. You need to understand everyone has different sets of challenges. Correct, everyone? Agree, sir. The p-value here. P-value is 0.00, meaning alternate hypothesis is true. You are looking at mean, you are doing the one-way ANOVA and two sample t test, etc. Correct? If you are looking at median, if your data is non-normal, you're looking at data which is non-normal. ध्यान रखना है, one-way ANOVA में you are doing the interval plot. Same if your data is non-normal, if your Y is non-normal data, then you can't use mean, then you will have to use median. Median has three tests that are supposed to be done. One referred to as one sample size, same one T ka replacement hai. Compare, instead of mean, you are now comparing median to a standard. Man-Whitney is a replacement for two t-test. Compare median of two groups. Moods median, compare median of greater than two groups. So wherever you have done one-way ANOVA, you will end up doing the Moods median if in the case of non-normal. So यहाँ we were doing one-way ANOVA, the replacement test will be Moods median. Clear, everyone? सबका battery down हो गया. In the past tale, I have two samples, two subgroups only. So I was doing the 2T test. The replacement of the 2T test is the Man-Whitney test. Man-Whitney. Again, here also the same test. Let me write interval plot. Same test will be applicable here also. वरना मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना टेस्ट पहले तो मैं याद कैसे रखूंगा और याद नहीं रखना है. What you have to do is you have to create a small sheet for yourself to be able to you should be able you should have a document with you. I am absolutely of the view that your mind is not a data processing center. It is a data processing center. It is not a data storage center. तो दिमाग को वैसे इस्तेमाल कीजिए. वन वे ANOVA का क्या रिप्लेसमेंट है people?
Median mode. Median. Modes median. वन वे नोवा मतलब मोड्स मीडियन। टेस्ट बहुत सिंपल है। That's all your median tests lie in this non-parametric side. One sample t की जगह पे one sample sign is right here. Two sample t replacement is Man-Whitney. Modes median replacement is one way ANOVA replacement is modes median. Let's start with modes median. Y collections versus previous experience. Press OK. Now it is comparing median instead of mean. I am also supplementing this with a graph or the box plot with group collection versus previous experience. You can see this line here is your median line. Median of collection of outbound sales is much lesser than the median of people from customer service. Everyone with me? Sir. Right, sir. Yes. सर कोई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा लेकर एक बार बता देते सर। So, this is data from a manufacturing organization. Y here is total breakage. X first date continuous या date discrete? Discrete data. Discrete. Machine is continuous data. This is in kilograms. All of this is continuous. Which means Y continuous, X continuous. Which test will you do? Regression. Regression. What graph will you make? Scatter plot. I have a column called result. I have two subgroups here, fail and pass. What test will you do? Two. If I'm comparing mean, I will do 2T test. 2T test. If I'm comparing median, I will do Man-Whitney. Man-Whitney. Another one, this is in minutes. Minutes is continuous data. Correct, now? Yes, sir. So same. Yes, sir. Yes, sir. Next, I have people who are pass, people who are fail. This is class 10th pass, class 10th fail. What test will you Man-Whitney do? or 2T. So Man-Whitney 2T. Man-Whitney. Baking time. Time is what? Continuous data or discrete data? Continuous. Continuous Continuous data. scatter plot regression. Baking time, baking temperature, both will be continuous data. Meaning, Nice. regression, scatter plot. Next, I have oven. I have how One many way ovens? ANOVA One way One way or ANOVA. modes median. Modes median. One way ANOVA, alternatives, modes median. Oval heat up time. Time again continuous. Continuous. Scatter and regression. Percentage data should not be used. You will have to convert this into pass fail. Vendor for Maida. I have 3 vendors. What test will you use? One way One way ANOVA ANOVA, modes median. and modes median. Perfect. Everyone? Vendor for ghee. I have 3 vendors. No. One way Amul. One ANOVA. way ANOVA, modes median. Perfect. Yes, no. Again, 2T test, Man-Whitney. Everyone? 2T and Whitney. क्या पुनीत? सर एक छोटा सा confusion है. When you were showcasing the test for one sample T, अगर आपके पास है तो, if you present your screen, उसमें there is a equation that comes which states or defines the. One T में regression में आएगा equation यहाँ. हाँ अब ये नहीं ये जैसे one sample T में आ रहा है ना null और alternate, right?
Now, as per this, if we consider the p-value, right? So we are saying that okay, it is less than 0.05. So meaning alternate is true. But ये ऊपर वाला जो equation है, that is not changing. What does this define? This is giving you the base, the statistics basis the data that you. नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला null ये तो hypothesis. null क्या है, alternate क्या है? By default, null is saying mean is equal to 160. Alternate is saying mean is not equal to 160. What question did you ask when you were doing one sample test? You said you were comparing the mean to a standard. Standard taken here is 160. So null is saying mean is equal to 160. Alternate is saying mean is not equal to 160. So इससे कुछ निकलता है या because it is not नहीं, changing whether ये तो decipher करना है तुमको. Now that you have 0.02, you will accept the alternate. Null is not true, alternate is true. That is what it is telling you. It's just giving you the baseline कि किसको accept करने से क्या meaning होगा. ठीक है, like in this case we are saying alternate is we are null is true because it is less than 0.05, so we are going for alternate. So alternate is true. तो बस will just तो इसमें कुछ changes नहीं होते हैं. कुछ नहीं चाहिए. वो तो rule book है. This is giving you the rule कि null का मतलब क्या होगा, alternate का मतलब. We can also say is like null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is accepted. In fact, आशीष कैसा होता है ना कि हम हमेशा alternate की भाषा में बोले, कभी हम null को accept नहीं करते हैं. हम बोलते हैं alternate reject हो गया. Please consider that I have been taken to the court of law. तो आप क्या बोल रहे हो? मैं दोषी हूं कि मैं निर्दोष हूं? मैं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हो. I don't have sufficient evidence to call you guilty. I'm not saying you are निर्दोष. निर्दोष is a third judgment. कभी कभार ऐसा होता है in the court of law that I have substantial evidence to conclude that Ashish Bansal is not guilty. The other side is I will give you a benefit of doubt. I am not sure, इसलिए I am giving you benefit of doubt. Correct ना? I don't have evidence enough to convict you. तो वो इसीलिए हम हमेशा null नहीं बोलते हैं. हम हमेशा बोलते हैं alternate accept नहीं हुआ. What is null? Alternate did not go through. या तो आप guilty हो या I have not been able to prove you guilty.